This is Dr. Good afternoon, everyone. This is Dr. Poornima Mathur. और आज Facebook Live में I've brought a topic called thin endometrium. So let's talk about it. Thin endometrium is something जो I guess आप में से जो fertility treatment की जर्नी में जा रहे होंगे must be aware of it. To be on वो, I'll just tell you what is endometrium. So endometrium यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है. वो लाइनिंग जो आपकी साइकिल जब शुरू होती है, जब आपको पीरियड्स आते हैं, वो लाइनिंग बननी शुरू होती है. एंड वो लाइनिंग जब बन के तैयार होती है, वहां पे आके आपका बेबी एम्ब्रियो चिपकता है एंड आगे ग्रो करता है. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, यही लाइनिंग आगे शेड ऑफ होती है, विच कम्स आउट ऑफ योर बॉडी एज मेंस्ट्रुअल ब्लड. सो अगर आप ये इमेज देखो, इसमें ये यूट्रस है. यूट्रस के बिल्कुल अंदर वाली जो लाइनिंग है, दैट इज द एंडोमेट्रियम. सो अब इस एंडोमेट्रियम को हम थिन क्यों कहते हैं, व्हाट इज इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. व्हेन वी टॉक अबाउट हमारी यूट्रस की लाइनिंग, जब हम एक आईवीएफ साइकिल में जाते हैं या किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, सिंपल एग बनने वाली मेडिसिन और आईयूआई करा रहे हैं, तो फाइनल जब हमारा एम्ब्रियो आता है, वो यूट्रस के अंदर आके ही स्टिक करता है. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गवर्न कि वो हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा कि नहीं होगा. तो वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, कि हमारी वो एंडोमेट्रियम कैसी है. Now, when we assess उसकी लाइनिंग को, the endometrium को, हम उसके different parameters assess करते हैं. One of them is the thickness. The other one is उनका pattern, कि pattern कैसा दिखता है. We go a little more advanced, then it comes the blood flow. So अगर आप ये देखो, the uterine endometrium जो है, at different parts of the cycle, say for instance आपको periods आए हैं and आपका egg बन रहा है, या आप embryo transfer की cycle में जा रहे हो, दिस इज व्हेन आपकी यूट्रस की लाइनिंग बननी शुरू होती है, द अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज. इसमें एंडोमेट्रियम जो है, उसकी मॉर्फोलॉजी ट्रिपल लेयर जैसी दिखती है. इसलिए जैसे हमारे इंडिया में 3 फोक्स की तरह आपको दिखेगी 3 लाइनिंग. दैट इज द आइडियल मॉर्फोलॉजी. एंड इसकी हम थिकनेस मेजर करते हैं, विच गाइड्स अस वेदर द एंडोमेट्रियम इज थिक और थिन. वेरी डिबेटेबल, बट हम नॉर्मल इसमें कहते हैं कि समवेयर अराउंड 7 mm इज द कट ऑफ दैट वी टेक एट द टाइम ऑफ ट्रिगर. जिस दिन आपका एग रप्चर होने वाला है, उस दिन अगर आपकी लाइनिंग 7 mm से नीचे है, दैट इज व्हेन वी टेक इट एज अ थिन एंडोमेट्रियम. नाउ वी विल से कि ओके फाइन, थिन एंडोमेट्रियम है, हाउ डू वी गेट टू नो कि आई माइट बी सफरिंग फ्रॉम थिन एंडोमेट्रियम, हाउ डू वी गेट इट इवैल्यूएटेड. पीपल गेट प्रेग्नेंट ऑल द टाइम, हमें नहीं पता उनका एंडोमेट्रियम कितना होता है जिनकी नेचुरल प्रेगनेंसी हो रही है. सो देयर वुड बी डिक्रीज्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो. अगर कोई पेशेंट है, अगर किसी को ट्रीटमेंट लेना है, देयर इज अ लेडी, उनको अगर पीरियड्स कम आते हैं, अगर बोले मैम मुझे सिर्फ 2 days पीरियड्स आते हैं, वेयर आई चेंज ओनली 1 pad इन अ डे, और कांस्टेंट पेन रहता है, एट टाइम्स पीपल आल्सो प्रेजेंट विद सेकेंडरी एमिनोरिया. सेकेंडरी एमिनोरिया का मतलब है हमें पीरियड्स आते थे आफ्टर अ सर्टेन इवेंट, से फॉर इंस्टेंस एनी इन्फेक्शन, एनी सर्जरी, एनी ट्रीटमेंट, हमें 3 months से पीरियड्स नहीं आए हैं, या हमारी साइकिल्स बिल्कुल इरेगुलर एंड शॉर्ट हो गई हैं. तब वी कैन सस्पेक्ट कि एंडोमेट्रियम में कोई इश्यू हो सकता है, which needs further evaluation. At times, people who have thin endometrium, they also come with infertility to us या recurrent abortions के साथ. And in a majority of people, it is usually asymptomatic. So, अब हम वो सोचिए कि thin endometrium के causes क्या? When do we think कि okay fine, अगर हमें causes पता है, तो we know कि whether we would be at a higher risk for thin endometrium or not. So one of the most common causes any surgery on the uterus. जब हम यूट्रस की सर्जरी कहते हैं, इट इज एज सिंपल एज अ डीएनसी प्रोसीजर जो आपका होता है, कोई अबॉर्शन और व्हाटएवर किसी रीजंस की वजह से, अगर जो लेमैन टर्म्स में हम कहते हैं यूट्रस की सफाई, बच्चेदानी की सफाई, अगर वो हमारे डीएनसी हुई है, अगर हमने हिस्ट्रोस्कोपिक कोई सर्जरी कराई है यूट्रस के ऊपर, लाइक फाइब्रॉइड रिमूव करना, या हमने कोई एंडोमेट्रियल अब्लेशन कराया है, तो दीज आर दी सर्जरीज विच विल प्रीडिस्पोज अस टू थिन एंडोमेट्रियम. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इन्फेक्शंस हो, इन्फेक्शंस में हमारे सिंपल पीआईडी हो सकता है जो क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस कॉज करके थिन एंडोमेट्रियम कर सकता है, और एज वी टेक इट इन आवर कंट्री, द मोर प्रेवलेंट वन इज ट्यूबरकुलस एंडोमेट्राइटिस. पेल्विक टीबी में आपकी एंडोमेट्रियम को डैमेज होता है एंड इट कैन लीड टू थिन एंडोमेट्रियम. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिसिन्स, सो अगर कंटिन्यूस हम लोग ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, वी कैन बी, at times we've seen the oral contraceptive pills are prescribed for every reason that is possible. You have an irregular cycle, you have a follicular cyst, you're taking oral contraceptive pills, and at times over the counter we take it for longer times also. If you're desiring contraception, well and good, हमें ये सेव करता है इस चीज से.
But when we come back to fertility, तो at times prolonged progesterone जो oral contraceptive pills में हमारे combined वाले में होता है, that can affect the endometrium, and when we are practically trying for pregnancy, it can give us thin endometrium. Other treatments, अगर हमने कोई radiotherapy treatment कराया है, that can lead to thin endometrium. अगर हम during the treatment protocol, if we are taking a clomiphene citrate का ovulation induction, so that medicine usually leads to a thinner endometrium. अगर हमारी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है, ओवेरियन इनसफिशिएंसी इज नेचुरल साइकिल में, अगर हम अपना नेचुरल वो रूटीन देखें तो उसमें व्हाई डू वी हैव एंडोमेट्रियम कैसे बनता है, यू हैव ओवरी में एक फॉलिकल डेवलप होना शुरू होता है, एंड दैट फॉलिकल हमारा ग्रोज फर्दर, वो ग्रो करता है, साथ में हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन, उस एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में हमारे यूट्रस के अंदर की लाइनिंग ग्रो करती है. नाउ दिस लाइनिंग इज द एंडोमेट्रियम, जिसकी हम थिकनेस मेजर कर रहे हैं, जिसकी हम मॉर्फोलॉजी मेजर कर रहे हैं. सो इफ द फॉलिकल इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपर्ली, द फॉलिकल इज नॉट अ गुड क्वालिटी, देयर इज नो हमारी उस साइड नहीं ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज व्हेन हमारा एंडोमेट्रियम कैन बी ऑन द थिनर साइड एज वेल. Now, one of the other things when we are evaluating thin endometrium is a major thing is the Asherman syndrome. इन सारी चीजों में से, फॉर इंस्टेंस रिपीटेड सर्जरी और इन सब में, दे कैन बी यूट्रस की, आपकी यूट्रस इज अ स्मॉल कैविटी, दिस कैविटी में जैसे जैसे आपकी लाइनिंग होगी, इट विल एक्सपैंड फर्दर, इट विल मेक स्पेस, उसकी वॉल्यूम आएगी, एंड दिस इज वेयर द एम्ब्रियो विल कम एंड इम्प्लांट. नाउ ड्यू टू सर्जरीज और इन्फेक्शंस एट टाइम्स ये यूट्रस की वॉल्स जुड़ जाती हैं, उनके बीच में अडेशंस होते हैं, and these adhesions का हम जो कहते हैं, we call it an Asherman syndrome. Asherman syndrome is when the walls would be joined because of with fibrous bands. Now these adhesions can happen after surgery, after a DNC or tuberculosis or any other infection. Now this will prevent the growth of the endometrium and it would present as a thin endometrium. So how do we diagnose it? How do we evaluate it further? Like अगर हमने सुना during the treatment protocol हमारा lining thin side पे रहता है, so how is it अगर हम एक transvaginal ultrasound करते हैं to monitor your cycle, that is when we can actually pick up a thin endometrium. So अगर आपकी natural cycle चल रही है, we see that. So the day हमारा follicle बन के ready है, the day आप HCG injection लेने वाले हो trigger, उस दिन अगर हमारी lining less than 7 mm है, that is where you need further evaluation for thin endometrium. और a routine hysterography, अगर hysteroscopy अगर हम कर रहे हैं, we find a pale endometrium with उसमें हमें multiple infection endometritis के lesions दिख रहे हैं, multiple polyposis दिख रही हैं, that is where we would suspect thin endometrium. और a routine अगर आप saline infusion sonography करा रहे हो, HST करवा रहे हो, vertebral evaluation, that is where you see multiple air pockets or multiple compartments in the film, that is where you would suspect that there can be Asherman and hence there could be a thinner endometrium or some endometrial pathology. So if in case we have thin endometrium, how do we proceed about it? So now for those who are undergoing an IVF cycle, now apart from the routine cycles, agar hamara IVF chal raha hai, so like IVF में the first part is egg बनाना, that is with the help of injections हम stimulate करते हैं ovaries को, eggs बनते हैं, the follicles are ready, and during that stimulation cycle we assess the endometrium. Now if during that cycle with that high levels, now every time जब हमारा follicle बनता है, that secretes the hormone estrogen. Now this estrogen is responsible for the growth of the endometrium. और जब एक हमारी IVF stimulation cycle होती है, तब the estrogen levels are high because of the higher number of follicles as compared to a routine loop. If with this high levels of estrogen, हमारा endometrium is not capable of growing, in that cycle, we will take a decision that since the endometrium is on the lower side, it will need further evaluation. It would need to be evaluated further. Hence, preferably we go for a frozen embryo transfer and we investigate it further. Now, if the endometrium grows well, so we can safely conclude कि हमारे endometrium का growth potential अच्छा है. So, if there's any problem in the FAT cycle, we can manage it by changing the protocol as well. So, the treatment is hormone therapy. Now, अगर हमारा, say for instance, if the egg is not good quality का, or we have the advanced stage है हमारी, so now in those cases, we can actually give the hormonal therapy. Hormonal therapy, we usually administer estrogen.
Now, this estrogen can be given orally, vaginally, transdermally to improve the lining of the uterus. Now, जैसे मैंने अभी बोला, during the cycle, अगर हम उसमें जा रहे हैं for the stimulation and we feel the endometrium is on the lower side, we take a call for a frozen embryo transfer and go proceed accordingly. Now, one of the major steps in evaluating a thin endometrium is going ahead with an hysteroscopy. Now, hysteroscopy में we put in a camera through your vagina, through your cervix, आपके uterus के अंदर, and we evaluate the uterine cavity. Now, this can help us diagnose कि कोई adhesions है तो. This can help us diagnose whether there is any endometritis that we are suspecting. This can help us diagnose tuberculous endometritis. Tuberculosis की हमारी कोई pathology है क्या? And if there is any septum or any other pathology that can be corrected. Now, in the same sitting, I've mentioned PRP. PRP, I think, is something that everybody must have heard. Maybe if not for fertility issues, for definitely for cosmetic issues as well. So PRP is आपके blood में जो growth factors circulate हो रहे हैं throughout the body, which are giving signals everywhere for growth. We separate them by method, by centrifugation and using certain things. हम उसको separate कर देते हैं. That is called a platelet-rich plasma. We think this has a growth potential. So this PRP can be instilled into the endometrial cavity, either by simple instillation or subendometrial injection of PRP via hysteroscopic method. Now, this PRP has actually helped improve the uterine lining. There are multiple studies which have seen, some have seen good improvement, some are equivocal. At the same time, जितना PRP effective है, उससे better we have a stem cell approach also. Now, stem cells is जो आपकी bone marrow में, जो आपकी bones के अंदर stem cells हैं, जो stem cells वो cells होती है जिनमें बहुत अच्छा growth potential होता है, जो अलग-अलग cells में differentiate हो सकती हैं and growth कर सकती हैं. तो इन stem cells की growth potential को use करके, now we take it out. It can be instilled into the uterine cavity under subendometrial, or it can be injected into the uterine artery. Blood में inject करते हैं directly near the uterus, which has shown good promising results in certain studies. So apart from the surgical management, there are multiple supplements that we take: aspirin, vitamin E, L-arginine, sildenafil, commonly known as the Viagra, growth hormone, and granulocyte colony stimulating factor. These are injections जो हम देते हैं in the uterine cavity or subcutaneously to improve the growth. Sildenafil or Viagra, it can be given vaginally twice a day to 4 times a day to improve the blood flow of the uterus. तो ये सारी medicines जो है uterine blood flow improve करती हैं in order to increase the endometrial lining. So apart from this, I would like to say that apart from all these treatments, there are multiple natural treatments also, black cohosh, raspberry oil, antioxidants that also help. So when we are assessing the endometrium, we assess the blood flow also and the morphology also. So after all these sittings, at times, अगर हमें लगता है कि नहीं, if you're going for a frozen embryo transfer and you have it कि every cycle मेरा lining कम बनता है, but during my IVF cycle, my lining was not that bad, or I had a flow which is normally good. So at times it can be a very personalized approach, like we do at Oasis. It's like every patient is different. For some majority of the people, hamara frozen embryo transfer and the hormone replacement therapy works. But for some people, the endogenous जो होता है, जो body के अंदर estrogen बन रहा है, that is more effective than the exogenous जो हम बाहर से दे रहे हैं in the form of tablets, patches, or injections or vaginal pessaries. So उन cases में a change of the protocol, like आप जब एस्ट्रोजन की टैबलेट्स लेके अपनी लाइनिंग बनाते हो, a change of protocol to a natural cycle method or a modified natural cycle can be adopted, which can help us get a better endometrium with a better vascularity. The endometrium needs to be assessed, उसका blood flow needs to be assessed कि हमारे subendometrial zone 3 and 4 में flow होना चाहिए. When we talk about IVF, we prefer कि endometrial thickness more than 8 mm is something that has shown a good positive outcome. There are multiple studies, जो international studies हमारी कहती हैं कि around 7 to 8, 6 to 7 have more or less almost similar, but less than 6 mm, it exponentially reduces with the thickness. हमारी implantation rate reduces, हमारी pregnancy outcome reduces. It does not say it is not possible. So at times, that is a call which your treating consultant can actually take, considering your morphology, your blood flow, and
your potential of the endometrium ki hamare initial cycles mein kitna grow hua tha, we can take a call for going ahead with the transfer. Or we can take a more personalized approach by changing the protocol or doing a more personalized test with the help of ERA, personalized transfer, and then go ahead with an embryo transfer to give us a positive outcome. At the same time, evaluation of the parameters कि यूट्राइन आर्टरी के ब्लड फ्लो कैसा है, अंदर स्पाइरल आर्टरी का ब्लड फ्लो कैसा है, हमारी एंडोमेट्रियल कैविटी की वॉल्यूम कैसी है, these all help us to improve the endometrial blood flow. So thin endometrium is a major challenge, but when equipped with adequate resources, adequate technology, majorly we can actually counter that. But in certain patients where the uterus is beyond repair, in grade 4 Asherman's, where it is after multiple surgery. Now, when it comes to Asherman's, it does not usually correct एक ही surgery sitting में. We might need multiple surgical sittings to correct it. So now, if in case you've tried everything and it does not work, there is always an option of going ahead with surrogacy for that. But before coming to that decision, it is advisable that we try everything. And at Oasis, we have all the facilities for PRP, hysteroscopic installation, all the medical managements. We have a more personalized approach for every patient so that we can help you overcome this thin endometrium and achieve your dream of parenthood. So that's Dr. Poornima from Oasis Fertility, Vadodara. If you have any questions, please let me know. Thank you so much. Yes, endometrium, the question is, does endometrium thin with age? So one of the major risk factors for thin endometrium is the advanced age also. So if somebody beyond 45 comes to us for a fertility treatment, we know that uterus has been a little deficient, the body has been a little deficient on estrogen. So in these cases, we usually prep the endometrial lining. We are more prepared. Somebody beyond the age of 40, we are more mentally prepared for a thinner endometrium, and the treatment plan goes accordingly. Can stress cause thin endometrium? Yes. So the thing I forgot to mention is, now during the evaluation of thin endometrium, it is very important to evaluate the hormonal parameters also, like your thyroid, prolactin, and your other gonadotropin levels. Now, stress can increase your prolactin levels, and this prolactin levels can actually hamper your endometrial growth. So if you have stress, you have excessive caffeine intake, if you are popping an NSAID during a transfer cycle, these are all going to adversely affect the lining or the thickness of your endometrium. Are there lifestyle changes or dietary recommendations that may help improve endometrial thickness? Yes, definitely we have. So now when it comes to the more natural ways of improving the endometrium thickness, one is we have maintain an adequate BMI. Now when we talk about BMI, it is the weight that is appropriate as per your height. So somebody who's too underweight or somebody who's too overweight, these are the people who are going to face issues with the endometrial thickness. So the target should be reaching the optimum BMI 18 to 23.5. That would be our target to either gain or reduce our weight so that we are in the optimum weight. The second is having an antioxidant-rich diet, having pelvic floor exercises and yoga helps. Black cohosh, foods rich in L-arginine, the raspberry tree extracts, things that are rich in antioxidants, these all help in improving the endometrial lining naturally. Thank you so much. If you have any queries, please feel free to call our helpline number. This is Dr. Poornima Mathur from Oasis Fertility, Vadodara.